welcome back to my channel and welcome to my Diwali series. Yes, I'm starting my Diwali series and I'm planning 3 looks of Diwali and this is the first look of Diwali series. Basically जो मैंने 3 looks decide किए हैं दिवाली के लिए, उसमें से 2 looks मैं सूट में करूंगी और 1 look मैं साड़ी में करूंगी. And this is the first look. Well, इस look को मैंने unmarried लड़कियों के लिए create किया है because इसमें मैंने most of the पिंक्स का यूज किया है बिकॉज आई गेस लड़कियों को पिंक कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. वेल मुझे भी पिंक कलर बहुत पसंद है. आई लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने मोस्टली पिंक, पीचेस और पर्पल का यूज किया है और ग्लिटरी आईज की है. सी दिस इज द आईज एंड आई थिंक it's looking really beautiful. This is basic Diwali look and I think this is the perfect look for unmarried girls who are planning to looks amazing on Diwali and जो दिवाली पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने चाह रहे हैं. So I think this is the perfect look. And if you want to know that how I get this look, then please continue watching. Okay, so आज का मेकअप हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम यूज करेंगे प्राइमर. प्राइमर के लिए मैं आज ले रही हूँ अपना बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर. I will use foundation. For the foundation, I'm gonna take Milani Conceal Perfect Foundation and in the shade 02 Natural. I will use concealer. For the concealer, I am taking my Maybelline का Age Revive concealer. So next I will use my loose powder, set my under eyes and loose powder के लिए मैं यूज करूँगी अपना bennye का loose powder. Okay, so now I will set my rest of the face with the compact. So for the compact, I'm gonna take my MAC Studio Fix compact. So अब हम करेंगे कॉन्टोर. कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ अपनी मोर्फी की Okay, now I will use blush. Blush के लिए मैं ले रही हूँ अपनी BH कॉस्मेटिक की ब्लश पैलेट और इसमें से मैं आज यूज करूंगी ये वाला बेबी पिंक कलर. बताइए आप लोगों की क्या क्या दिवाली की प्लानिंग है, क्या क्या प्लान कर रहे हो इस बार दिवाली पे. वेल मेरा प्लान है कि मैं इस बार व्लॉग करूं दिवाली पे. धनतेरस से मैं आई थिंक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी. धनतेरस पे मैं ब्लॉगिंग करूंगी, छोटी दिवाली पे और बड़ी दिवाली पे भी. और अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगी आगे भी. सो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप लोग मुझे कैसा रिस्पांस देते हो भी अब मेरी ब्लॉग्स में.
अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अपनी ब्लॉगिंग आगे भी कंटिन्यू करूंगी। वेल दिस इज माई फर्स्ट टाइम जब मैं ब्लॉग करूंगी, सो मैं ऑब्वियसली नर्वस भी होंगी, सो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार दिवाली के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में ब्लॉगिंग करने जा रही हूँ और मेरे काफी सारे प्लान्स हैं कि मैं ये चीज भी ब्लॉग में शूट करूँ, ये चीज भी, और कोशिश करूंगी कि मैं जो धनतेरस पे हम लोग जो शॉपिंग करेंगे, आई मीन जो धनतेरस की शॉपिंग होगी उसको भी मैं ब्लॉग में अपने इंक्लूड करूँ। आई ट्राई, बाकी लेट्स सी। ओके, तो अब हम करेंगे अपना हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी अपना फॉरएवर 52 का हाइलाइटर। ओके, सो अब हम करेंगे अपनी ब्राउज। ब्राउज के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन की नेल पैलेट। अब हम करेंगे अपनी आईज। आईज के लिए मैं ले रही हूँ अपनी मोफी की 35 वो पैलेट। सो फर्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाला पिंक कलर, बेबी पिंक कलर एज अ ट्रांजिशन। हम क्रीज के लिए यूज करेंगे ये वाला डार्क पिंक कलर। आउटर कॉर्नर के लिए मैं यूज करूंगी पर्पल कलर। ओके, सो अब मैं डालूंगी अपनी लिप पे शेड। लिप के लिए मैं चूज कर रही हूँ ये वाला पिंक कलर। ओके, सो अब हम यूज करेंगे ग्लिटर। ग्लिटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना इंग्लॉक का ग्लिटर। सो अब हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ अपना मेबलिन का Now I will use mascara. For the mascara, I'm going to take Maybelline Glossy Mascara. I will do my lower lash line. Lower lash line के लिए मैं सेम hot pink color चूज कर रही हूँ। Now I will take this purple color and अपनी lower lash line को मैं इससे smudge।
use nude pencil. For the nude pencil, I'm going to take Wet n Wild की nude pencil. अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपनी मैटमी की लिपस्टिक इन द शेड स्टेरी पिंक 420, और मैं इसको टॉप अप करूंगी अपनी स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक से इन द शेड ड्राइवर्स। वेल, आई लव मिक्सिंग माई लिपस्टिक। मैं बहुत कम सिंगल शेड से सेटिस्फाइड होती हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज मिक्स 2-3 लिपस्टिक। आई डोंट नो, बट मुझे लिपस्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, सो मैं अपना Maybelline का 30 रोमांटिक कलर भी यूज करूंगी, एंड मैं इसको सिर्फ सेंटर में डालूंगी। Yeah, I think this is the perfect shade. यूज करूंगी अपना सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे को यूज करने से पहले उसको अच्छे से शेक कर लो एंड देन स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस। नाउ जस्ट लेट इट ड्राई। Okay, so मैं आपसे मिलती हूँ फटाफट चेंज। Okay guys, so this is the final result of today's video. Please let me know कि आपको यह लुक कैसा लगा, और प्लीज अपने कमेंट से बताइए कि आप ये लुक क्रिएट करना चाह रहे हो दिवाली पे, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू रिक्रिएट दिस लुक देन डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम, टैग मी ऑन माय इंस्टा आईडी। मैं अपने जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो मैं आपकी रिक्रिएशन को अपनी स्टोरी पे रीपोस्ट करूंगी, सो डोंट फॉरगेट to tag. That's all for today's video. I'll meet you in my next video with the second look of Diwali series. Till then, bye bye, take care.